Good evening, students. So today you have a little disturbance in the noise, but I make sure that there's no problem while you're listening to me. In case you have any problems, you could let me know in a point of time. Because I'm not at the regular place where I take classes from. I'm at a different place. But I made sure that you have sufficient connectivity and you can hear my noise, you can hear my lecture. Okay, very good. Before we proceed further, there is a good question asked by Nistala that so many statutory authorities have been exempted, right? Like PF authorities and things like that. Is RBI services also exempted? Is a question. Nistala, very good observation. You see the study material also, it's clearly mentioned that services of RBI is not exempted anywhere. So the services of RBI is not exempted anywhere. Services provided by RBI and services provided to RBI, both are not exempted. They are all taxable. Any others who have studied and have some doubt? Good evening, Preeti. Good evening, Sushil Kumar, Nishtala Shravani, Mr. M. Gowda, Tanu Vishwakarma. Very nice to see you all. So many other names. So what are we reading today? What are we trying to understand today? Two important topics, which is procedural aspect, but still very relevant for us, is on payment of taxes. How do you make the payment? What is the process? And then we will then go to the TDS and TCS provisions. Because TDS and TCS are generally relevant in income tax, but now because of the new TDS and TCS provisions, for intermediate also, this has been included. Earlier, this was not included. Now it is included. So all TDS and TCS provision, to whom it is applicable, what is the rate of tax? This is very interesting. So TDS and TCS also is included now. Good evening, Ms. Bhumika. E-Waybill chapter, see, E-Waybill is only a procedural aspect, that's why I've not covered. And considering that these are not extensive classes wherein we will take all the chapters. So this are only this session is specifically there for the next batch, because as you are aware that the system has changed from, for the intermediate students specifically, it has changed from twice in a year to thrice in a year, right? So we will have to accommodate this. This is the first batch for September batch. So you will have to, and luckily there is not much of a changes in terms of your what we have studied in May, right? So you may have to go through the extensive classes, because for one topic of exemption, we have taken 3 classes there. So if you go through those classes, if you go through E-Waybill, which is a separate chapter there, and if you have any queries, these sessions are meant to answer your queries itself. Okay, so that's where the important chapters have been considered. If you have any questions, then you will have to ask in these sessions. That is the objective. In any case, since there are not many questions which have been posed by the participants, that's the reason I'm taking through the extensive classes. But don't get mistaken that this extensive classes will be sufficient. These are like a what do you call it, quick classes. Okay? These are not replacement of the actual classes. So you may have to go through the actual classes and then come to this if you want to have a quick snapshot of the chapters. Whichever chapters, like how Nistala is referring out E-Waybill, those you will have to refer to the specific classes which were taken for May batch. नहीं तनु, इस क्लास में, इसमें शेड्यूल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रिविजन्स के लिए है. लास्ट बैच में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सभी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, जिस करीबन 50 से 60 प्रॉब्लम लिए थे मैंने हर चैप्टर से अलग अलग तरह से. वो चैप्टर्स को मैंने क्वेश्चंस भी पोस्ट किया है, फिर उसमें आंसर्स भी दिए हैं. एक एक आंसर, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने वर्कआउट किए हैं. आप प्लीज वो लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. आई थिंक रिकॉर्डिंग में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज
रिकॉर्डिंग में आपको क्लियरली सब दिखता है, या डू यू फील दैट दीज क्लासेस आर बेटर? अगर आप कुछ फीडबैक देंगे ऑल द स्टूडेंट्स, देन आई कुड रेकमेंड टू द बोर्ड ऑफ स्टडीज कि नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम से एटलीस्ट कुछ चेंजेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग से वीडियो रिकॉर्डिंग्स है उसमें क्वेश्चन आंसर्स और फिर मैंने अपलोड भी किया है सब क्वेश्चंस और आंसर्स, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो आपने देखे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेक्चर्स, कैसे लगते हैं आपको? which you are talking is May 24, करेक्ट? May 24 के बैच में हमने एक्सटेंसिव किया था। तो दिव्यांशी, आप प्लीज उसको रेफर कीजिए। May 24 is the recent batch, and after that very few changes happen in, because even if you see the board of studies में the updates are yet to come. Okay, let me just check if the updates have come. Decision are good for concept clarity. Yes, that is nice. Yeah, but what I would expect is more questions, because if you have to clear your concepts clearer further, then you should have a one set of reading and then come for this, so that we are in line with each other. Let me just check the study update if it is uploaded. Amendments and developments, intermediate. For me, okay. What I can see is statutory update is there in income tax and for September, but for GST it is still for May 24 itself. So for now, you just have to go through the previous lecture, because there it is all updated up to May 24 examination. So that is relevant at the before September. So probably by end of July, you should be getting a statutory update booklet, which will be available on the Board of Studies, which you should refer any changes after the May 2024 examinations. वेरी गुड तनु, आपने देखा था वो क्लासेस, अच्छा है। तो उससे आपको सब कुछ कवर हो जाएंगे, इसमें पूरा डिटेल आपको नहीं मिलेगा। और स्टैट्यूटरी अपडेट्स कैन बी रेफर फ्रॉम बैच 1 May 24 September 24। हाँ, स्टैट्यूटरी अपडेट्स भी आप वहां पे भी देख सकते हो, बिकॉज देयर आल्सो इट इज 90% इट इज कवर्ड। And I'm not taking any statutory updates this time, क्योंकि if I take something and I don't know if the board of studies is thinking to cover it or no, तो इसलिए board of studies का official update पेपर के लिए वेट करेंगे, उसको देख के फिर आप पढ़िएगा। And basically I've given my number on the session, right? So if you have any queries, please contact me. We can discuss over there. So with this basic thing, can we proceed with today's classes? और आपको कुछ और doubt है तो I can give you 2 more minutes so that we can clarify before getting into the chapter of payment under GST. नहीं निश्चला, ये लास्ट क्लास नहीं है, but I've not got the schedule for the next class. But the allotted topics is there is one more topic on returns. So returns तो cover करना ही पड़ेगा. So I may have another session on returns. सितंबर 24 के लिए भी रिवीजन टेस्ट पेपर मेरे ख्याल से आना चाहिए, बिकॉज रिवीजन टेस्ट पेपर आई सीन इट्स सो वेरी गुड। तो आई बिलीव कि सितंबर हर कोई एग्जाम्स के पहले आते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 2 times से 3 times हो रहा है, तो वी विल हैव टू सी, वेट एंड वॉच। यू कैन रेज अ क्वेरी, और तनु आप क्वेरी रेज करते हो बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए, फिर आप बोर्ड ऑफ स्टडीज वाले आपको क्लैरिफाई कर देंगे। Okay, are you ready? Okay, so everybody said that we can start this session. What about the people on the Zoom? Zoom के participants का reply मुझे नहीं मिल रहा है।
Are you ready? Can we proceed with today's session? Can we start payment of taxes and TDS and TCS? As usual, I will try to make it simple. आपको ये बताने की क्या क्या important चीजें हैं, क्योंकि इन डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो दिखा देंगे. वेरी नाइस, गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम जूम पार्टिसिपेंट्स कि हम मेन कॉन्सेप्ट्स में जाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस किस किस तरह का क्या क्या पेमेंट करते हैं हम लोग. हम अलग अलग तरह का पेमेंट करते हैं, राइट. तो सीजीएसटी इज द टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एंड एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या रेस्पेक्टिव यूनियन टेरिटरी को जाएगा. वॉट एवर आईजीएसटी पेमेंट वी मेक अगेन गोस टू सेंट्रल गवर्नमेंट. तो फिर दो बार सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों क्यों जाता है. इट इज अ सिस्टम इन सच अ मैनर कि हम जब इंट्रा स्टेट सेल करते हैं विद इन द स्टेट, तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि एनी ट्रांजैक्शंस हैपनिंग विद इन द स्टेट 50% will go to the center and 50% will go to the center. 50% go to the center, 50% will go to the state. ठीक है, there is no problem with that. लेकिन जब इंटरस्टेट आता है, in case of interstate, we don't know whom should that revenue go to. Correct? फिर सेम इशू व्हाट वाज देयर बिफोर जीएसटी, बिफोर वैल्यू एडेड टैक्सेस का जो प्रॉब्लम था कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से लड़ाई करेगी कि सप्लाई मेरी स्टेट से हो मुझे टैक्स देना चाहिए, दूसरे स्टेट कहेगा नहीं कंजम्पशन मेरे स्टेट में हो मुझे आना चाहिए. तो उन सब को रिजॉल्व करने के लिए दिस आईजीएसटी हैड कम इन. सो आईजीएसटी में क्या होगा, स्टेट्स की लड़ाई नहीं होगी, सेंटर को सीधा जाएगा और सेंटर फिर उसको अपोर्शन करेगा. एज वी हैड सीन इन द प्रीवियस चार्ट, आईजीएसटी इज ओनली अ इंटरम मैकेनिज्म, क्योंकि जब मैं यहाँ से किसी और को सप्लाई करता हूँ वो सामने वाला दूसरे स्टेट में क्रेडिट तो लेगा. करेक्ट. एंड ही इज टेकिंग द क्रेडिट, तो फिर उसको तो क्रेडिट कहाँ से तो मिलना चाहिए. तो आईजीएसटी क्या ये प्रोग्राम को पैकअप करता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए ये ट्रांसफर करता है. सो आईजीएसटी में एक्चुअल में रेवेन्यू बहुत कम होता है. कब रेवेन्यू होगा, तब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कंजम्पशन होता है. जब मैं यहाँ से दूसरे स्टेट में जाके कंज्यूम करता हूँ और मैं उसका क्रेडिट नहीं लेता हूँ, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा. अदरवाइज इट हैज टू गेट पास ऑन मैकेनिज्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. इसीलिए आईजीएसटी में ज्यादा कुछ कलेक्शन नहीं होगा. बट एनी केस वॉट एवर कलेक्शन हैपेंस इन आईजीएसटी, that will again get distributed amongst the state and the central government. So there is a mechanism, there is a special law for that saying that distribution of revenue, जो भी IGST का revenue है वो कैसे distribute होगा. So we know CGST, SGST directly collection होता है, लेकिन आप अगर CGST, SGST आउटवर्ड सप्लाई पे ही टैक्स कलेक्ट करोगे तो फिर गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं होगा. They will not have any control on unorganized sector, राइट. कोई होगा जो पे करेगा, कोई पे नहीं करेगा, लेकिन मैकेनिज्म ऐसा बनना चाहिए, टैक्स रोबस्ट सिस्टम बनना चाहिए कि अगर बीच में कुछ लीकेज हो तब भी उसको पता चल सके. इसलिए टीडीएस और टीडीएस टीसीएस पेमेंट्स है. व्हाट इज टीडीएस पेमेंट्स इज, जब मैं किसी को पेमेंट करता हूँ परचेज के लिए, उससे मैं टैक्स डिडक्ट कर देता हूँ. ठीक है, ताकि वो रिटर्न फाइल करे और इस टीडीएस का क्रेडिट क्लेम कर सके. क्योंकि अगर ये टीडीएस वो क्लेम नहीं करना चाहता तो फिर उसका लॉस हुआ, उसको लॉस नहीं होना चाहिए, राइट. सो ही विल फाइल अ रिटर्न. जब वो रिटर्न फाइल करेगा तब उसका सेल्स पूरा रिपोर्ट हो जाएगा. एंड देन टीसीएस पेमेंट इज ऑपोजिट ऑफ टीसीएस टीडीएस. उसको भी हम समझेंगे कि जब टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, टीसीएस है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. सो दीज आर द वेरियस पेमेंट ऑफ टैक्सेस. इसके अलावा क्या पेमेंट होते हैं, इंटरेस्ट, पेनाल्टीज. इंटरेस्ट कब होगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 बोलता है जब भी आप लेट फाइलिंग करते हो, लेट पेमेंट करते हो, देन इंटरेस्ट बिकम्स ऑटोमेटिक, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. लेकिन पेनाल्टी क्या है, पेनाल्टी आपको जनरली इवन दो स्टैट्यूटरी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन पेनाल्टी आपको जब ऑफिसर डिमांड करता है तब पे करना पड़ेगा. ऑफिसर कब डिमांड करेगा, तब जब वो कुछ किसी तरह का एडजुडिकेशन असेसमेंट करेगा तब पेनाल्टी पे करना पड़ेगा. ठीक है. वन फीस क्या है, एनी लेट फीस और एनी अदर पेमेंट, ऑल दीज आर द मेजर पेमेंट्स व्हिच कम्स. वेरी गुड. देयर इज अ क्वेश्चन हियर, क्या स्टैट्यूटरी अपडेट नहीं आएंगे तो मे वाली ही अप्लीकेबल होगा. हाँ, अगर स्टैट्यूटरी अपडेट नहीं आते हैं तो फिर मे वाली ही applicable. ठीक है.
नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द टैक्स पेमेंट्स, हमको फर्स्ट कंप्लायंस करना है. वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट सेशन की कंप्लायंस का फर्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन. तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया. वंस यू हैव डन योर रजिस्ट्रेशन, देन आपका फर्स्ट कंप्लायंस हो गया कि और रजिस्टर्ड, आपका जीएसटी नंबर आ गया है. आपको रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हो, आपका क्रेडिट भी मिल जाएगा. करेक्ट. सो फर्स्ट यू हैव डन अ रजिस्ट्रेशन. फिर आपके ऑटोमेटिकली आपके जीएसटी पोर्टल में आप लॉग इन करोगे तो आपके 3 लेजर खुल जाएंगे, विच आर कॉल्ड एज ई लेजर्स, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स. ई लेजर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स. कौन से ई लेजर्स हो जाएंगे? 3 ई लेजर्स खुल जाएंगे. वन इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और थर्ड वाला है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर. ये लेजर नाम नहीं है लेकिन रजिस्टर है, तो दिस इज ऑल्सो लाइक अ लेजर. फर्स्ट 2 लेजर्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है, दिस इज प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड बाय द टैक्स पेयर. मतलब आप जो डेटा देंगे उसके हिसाब से ये लेजर्स अपडेट होंगे. जैसे कि मुझे टैक्स पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, रिटर्न्स फाइल करने से पहले ही मैं कैश डिपॉजिट कर सकता हूँ. वंस आई डिपॉजिट दिस कैश, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाएगा, बिकॉज आई मेड द पेमेंट इन कैश. कैश का मतलब हो जाएगा यहाँ पे इधर हार्ड कैश या फिर बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट को भी कैश बोलते हैं. सो यू कैन मेक अ पेमेंट थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंक अकाउंट में जाके पे कर सकते हो. ऑल ऑफ दिस विल गो टू योर, यू हैव टू गिव अ जीएसटीआई नंबर. जीएसटीआई नंबर देंगे तब ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एड अप हो जाएंगे. ठीक है. फिर जब आप कुछ परचेज करते हो, करेक्ट, पर सप्लायर आपको जीएसटी चार्ज करेगा. वो जो चार्ज करेगा वो आपको जीएसटीआर 2A में दिखेगा, और अभी तो जीएसटीआर 2B में भी दिखेगा. उस बेसिस पे आप क्रेडिट लोगे. जो जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B है, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एडअप नहीं होता है. वो तो एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है. उसके बेसिस पे आपको आपके परचेज देखने पड़ेंगे, एंड देन रिटर्न कॉल्ड एज जीएसटीआर 3B रिटर्न. तो आपको की इन करना पड़ेगा कि आपके क्रेडिट कितने हैं. जब आप की इन करते हो एज अ क्रेडिट आपके इस मंथ के, वो 3B फाइल करते ही तुरंत वो क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाता है. Yes, once you file your GST or 3B return, that gets accumulated and gets added to your electronic credit ledger. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की खास बात क्या है कि आप जब भी कुछ रिटर्न फाइल करते हो 3B की, वो डायरेक्टली जाके क्रेडिट लेजर में बैठ जाता है. फिर जब आप पेमेंट करोगे उसी 3B में, जब आप आपके टैक्सेस पेमेंट करोगे, उसका रिडक्शन भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कम दिखेगा. तो आपके बैंक स्टेटमेंट की तरह समझिए. जब आप बैंक में कुछ जमा करते हो, चेक डालते हो, तब आपका बैलेंस बढ़ जाता है. सिमिलरली आपको जब परचेज डिटेल्स, तब आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस बढ़ जाएगा. और देन तो आपका बैलेंस कम हो, जब टैक्स पेमेंट करते हो. सिर्फ 8 दिन का बैलेंस होता है या कैसे होता है? व्हाट इज योर बैलेंस? तो आपके बैंक बैलेंस अगर आप आज देखोगे तो कौन सा बैलेंस दिखेगा आपको? क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस ठीक है. क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखता है? व्हाट विल बी योर क्लोजिंग बैलेंस?
करंट बैलेंस, करेक्ट। वो करंट बैलेंस जो होते हैं पुराने बैलेंस रहता है, कल का बैलेंस रहेगा, फिर आज का ट्रांजैक्शन करके एड अप होता है, करेक्ट। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी लास्ट मंथ का बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा, फिर इस मंथ का क्रेडिट ऐड करेगा, फिर पेमेंट जो है डेबिट उसको रिड्यूस करके नेट बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट लास्ट मंथ्स बैलेंस, फिर करंट ईयर क्रेडिट, देन debit of current month's payment, then it will give you a closing balance. So it's a recurring balance. Previous year का credit भी आप carry forward कर सकते हो. Okay, so it's in the credit ledger. It will be like previous year balance and then current month's transaction. That is electronic credit ledger and electronic cash ledger. Now going to the electronic liability register. Now this इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने आपका जीएसटी या 3B फाइल कर दिया, उसमें आपने दिखा दिया कि आपका कितना लायबिलिटी है. So that will come and get added to this electronic liability register. Whatever you say this is payable, वो electronic liability register में आ जाएगा. और फिर जो आपने पेमेंट कर दिया है either through cash or credit, उतना कम हो जाएगा. Okay? Electronic liability register will show that how much is your liability. Once you make the payment through cash or through your credit, उतना liability कम हो जाएगा. The ultimate objective is electronic liability register should always remain zero. Liability कुछ रहना नहीं चाहिए. एक दो वजह से यहाँ पे आ जाता है, prepared and updated on two bases. One is on the basis of our returns and basis of the demand by the tax officer. कि वो कुछ ऑडिट करता है या कुछ इंस्पेक्शन करता है, उस टाइम उसको लगता है कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया है, तो एक शो कॉस्ट नोटिस देगा आपको, फिर एक ऑर्डर पास कर देगा, और उस ऑर्डर के बेसिस पे लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. वो लायबिलिटी भी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में ऐड हो जाती है. Yeah. So Abhi, once we understood the basics, let us understand what we'll try to cover in this. We will try to cover payment of taxes, interest, penalty, which is given under section 49, and maintenance of those three electronic ledgers. Then 49A says how to utilize the ITC. Okay, what you can utilize the ITC for, and 49B says order of utilization, कैसे utilize करना है. Section 50 talks about interest on delayed payment of taxes. This section you will have to remember, because interest on refund and interest on or liability, everything is given in section 50. So 50 is for interest on delayed payment of taxes. 51 is circumstances in which TDS becomes mandatory. So TDS ka section is 51 and TCS ka section is 52. 53 and 53A is transfer of input tax credit, and 53A is transfer of certain options. Basics is liability on supply is determined that discuss monthly returns. जो मंथली रिटर्न्स है, पहले GST 3 था, लेकिन अभी मंथली रिटर्न इज GST 3B, but payment is made through various sections. Liability not paid completely in time, because it can be partly paid in cash and partly credit. And whatever provisions we have discussed with CGST, those provisions will also apply to IGST. Okay? Because जो हम taxes पे करते हैं, electronic credit ledger, that electronic credit ledger is there as a common ledger. उसमें 3 कॉलम दिखेंगे आपको, CGST, SGST, IGST. So ये सेम प्रोविजंस CGST के जो SGST में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन IGST में एक सेक्शन लिखा है, सेक्शन 20, वो जो बोलता है कि all the provisions of CGST will apply to IGST law. तो फिर रिप्रोड्यूस नहीं है, इसलिए आप देखोगे कि IGST का प्रोविजन बहुत छोटा है. The act of IGST is very less because major provisions CGST में आ गए, and section 20 क्या है, CGST के प्रोविजंस को वहां से बोरो कर. And then rules, क्या relevant rules है for electronic liability register. Rule 85 is for electronic liability register. जो liability register उसको किस फॉर्मेट में मेंटेन करना है सिस्टम में, PMT01, फिर PMT02 है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए, एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए
PMT 05 इजी है ना, रूल का याद करना 85, 86, 87. 85 is liability register, 86 is credit register, and 87 is electronic cash ledger register. Cash ledger. The first one is register, those other two are ledgers. But आपको तीनों को jointly बोलते हैं these three things are called as electronic ledgers under GST. So Rule 85 electronic liability register, Rule 86 electronic credit ledger, and Rule 87 is electronic cash ledger. Maintenance of taxpayer wise electronic ledgers. जब आप रजिस्टर करते हो, रजिस्ट्रेशन लेते ही आपके खाते में 3 लेजर्स खुल जाएंगे. One is electronic liability register, ITC ledger. Okay, ITC is input tax credit ledger. So electronic credit ledger भी कहते हैं या उसे ITC ledger भी कहते हैं. And cash ledger is the third ledger. इसमें nothing much to be discussed. Yeah, section 49. What it says, what is the payment you make? First, electronic liability register में तो सिर्फ liability आएंगे, लेकिन electronic cash ledger और credit ledger में क्या difference है? That is very important. क्योंकि अब दोनों आपके क्रेडिट में है, करेक्ट? दोनों आपके क्रेडिट में है, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि which one is better. पूजा गुप्ता, is my voice clear now? तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बहुत बड़ा फर्क है. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में एनी पेमेंट्स व्हिच इज मेड थ्रू वेरियस पेमेंट मोड्स, जो वेरियस पेमेंट मोड्स हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो भी हम पेमेंट करते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा हो जाता है. सो ऑल पेमेंट्स मेड थ्रू वेरियस पेमेंट मोड्स गेट्स accumulated in the electronic cash ledger. Or very important, whatever TDS and TCS is deducted by your suppliers, जो आप किस कस्टमर को सेल करते हो, कस्टमर क्या है, TDS and TCS डिडक्ट करके पे करना है. जो TDS and TCS वो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ गया तो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, या आई विल इंक्रीज माय वॉइस. थैंक यू पूजा, अभी तो ठीक होना चाहिए वॉइस, आप जस्ट चेक कीजिए. एंड सेकेंड थिंग इज कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर ज्यादा बैलेंस रहेगा तब बेटर रहेगा देन क्रेडिट लेजर, क्योंकि क्रेडिट लेजर यूटिलाइज करने के लिए लिमिटेशंस है, कैश लेजर को यूटिलाइज करने के लिए कुछ भी लिमिटेशन नहीं. तो टीडीएस एंड टीसीएस भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऐड. ठीक है, तो तक क्रेडिट हो गया. फिर डेबिट, कौन सी चीजें डेबिट होगी? आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को किस चीजों के लिए यूज कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को आप टैक्स पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, पेनाल्टी फीस और एनी अदर. इसका मतलब क्या हुआ? आप यूज कर सकते हो, यू कैन यूज द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट. एनी सॉर्ट ऑफ पेमेंट्स कैन बी मेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. इंटरेस्ट, पेनाल्टी सब कुछ पे कर सकते हो. ऑन द corollary, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है आप यूज कर सकते हो. फर्स्ट किसके लिए यूज कर सकते हो? जैसे यहाँ पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यू कैन ओनली यूज फॉर मेकिंग आउटपुट टैक्स अंडर दिस लॉ, IGST law. You can only make use of the electronic credit ledger for making payment of the output tax under this law or the IGST. उसके अलावा आप किसी के लिए यूज नहीं कर सकते हो. Second thing is input tax credit is on self-assessed basis. The credit, जैसे हमको बैंक में कुछ जमा करना है तो हमको पैसे जमा करना पड़ता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज लाइक अ बैंक अकाउंट. कि आपको कुछ बैलेंस बढ़ाना है तो आपको बैंक अकाउंट में ही पे करना पड़ेगा, और आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस बढ़ाना है तो आपको क्रेडिट से ही बढ़ सकता है. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कैश का इंटरवेंशन नहीं होगा. You cannot deposit any cash in your electronic credit ledger. You will have to use the credit. जो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पढ़ा था, उन सब का बेसिस जो है एडिशन माइनस करके नेट अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा. सो वॉट एवर यू डू इन टर्म्स ऑफ योर claiming credit, all that credit will flow into the electronic credit ledger. TDS and TCS भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं होगा, और फिर उसका यूटिलाइजेशन भी लिमिटेड है.
उसका खपत भी लिमिटेड है और उसका यूसेज भी लिमिटेड. क्लियर टिल नाउ? What can be those other amounts which can be paid through electronic cash ledgers? Yes, that is what I've highlighted here. Or you're saying any other amount. Okay. Jesse, if you have to pay any late filing fees or any kind of payment during inspection, here inspector आ गया, उसको inspection करना है, and he says that you have to make some deposit of taxes. Okay, that is not a tax while filing return. So return filing because that's you have not filed a return. It's like a kind of a penal amount for you कि आपको payment करना है. That amount also you can make payment to the electronic cash ledger. Okay. So let's go with each and every ledger and understand this. What is electronic cash ledger? It is a summary of all the deposits or payments made by a taxpayer. Okay. Whatever payments you make gets added to your electronic cash ledger, treated like a bank account with the government. आपका बैंक अकाउंट जो है आपको जनरली यूटिलाइज होता है, राइट, आपके पास रहता है, लेकिन ये जो बैंक अकाउंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो हम बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैंक अकाउंट है, लेकिन उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है. आपको विड्रॉ चाहिए तो आप इससे चेक इशू नहीं कर सकते, करेक्ट. इसको क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट के लिए यूज करना पड़ेगा. लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज में सपोज मेरे को 20,000 रुपीज जमा करना था. नाउ आई डिपॉजिटेड 2 लाख रुपीज. कैन आई टेल कि मैंने गलती से 2 लाख किया एंड प्लीज रिफंड मी दैट 1,80,000 रुपीज? कैन आई से सो? Advanced GST, yes, you can make payment of advanced GST also. सपोज आपका लायबिलिटी मंथ एंड में आता है, लेकिन आपको एडवांस में पे करना है तो कर सकते हो. बैंक अकाउंट में रखते हो तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रखोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. लेट पे करेंगे तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट मांगेगा, लेकिन एडवांस में आप जीएसटी पे कर देते हो तो उसका आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा. सो माई क्वेश्चन इज, सपोज मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट करना था 20,000 रुपीज, मैंने गलती से एक जीरो ऐड कर दिया है और 2 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिया है, तो फिर कैन आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि मेरे हाथ से एक्स्ट्रा हो गया, मुझे रिफंड दीजिए? Okay, what are my friends on the Zoom saying? Can you get a refund or you cannot get a refund? People from the POS app are saying yes, you can get back the refund. No refund can be utilized for next payment. Okay, but as the majority had said it rightly,
you're making extra deposit in your electronic cash ledger, you can claim refund of it because it's your money. There is a provision wherein you can claim back the refund of the amount lying in your electronic cash ledger. Yeah, because it is like a bank account, so you cannot give checks from that, but you can make payments, you can claim back the refund of the additional or excess amount what you have deposited in your electronic cash ledger. Of course, if you don't want to claim a refund, you can utilize for the next month. That is also fine. They can आपको refund चाहिए तो refund भी ले सकते. Payment of tax. What are the features? This is the tax payment what we make through Chalan. This is an electronically generated Chalan. You cannot have a physical Chalan. Chalan has to be generated from the portal itself by giving your GST number, which the portal already has. Select the amount and mention the mode of payment. A Chalan will get generated. A Chalan will get generated from the portal itself. And from electronic generation from GST and count portal in all modes of payment. And no use of manually prepared challan. जैसे पहले ज़माने में रहता था. Even now I see that, at least not now, at least 2 to 3 years back, I was seeing that income tax payment, TDS payment was all through manual payment, manual challans, but that is not the case now. It is all online itself. Facilitation for the taxpayer by providing hassle-free anytime, anywhere mode of payment. तो आपको ये fixed time पे payment करनी है, ये जरूरत नहीं. You can make the payment anytime, anywhere, to any mode. Then convenience of making online payment. तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की कन्वीनियंस है. लॉजिकल टैक्स कनेक्शन डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट. एक बार इलेक्ट्रॉनिक हो गया तो गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड रहेगा. आपको फिर से पेमेंट करके उसको प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं है. वंस यू मेक द पेमेंट इट गेट्स अपडेटेड इन देयर सिस्टम. फास्टर रेमिटेंस. गवर्नमेंट को भी जल्दी टैक्स आता है. पेपरलेस ट्रांजैक्शन फुल्ली. स्पीडी अकाउंटिंग फ्रॉम द टैक्स अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव. इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन हो जाता है ताकि बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर यू कैन इन्फॉर्म द ऑफिसर एज वेल. Simplified procedures, and it has a warehouse of all the digital payments which is being made. What are the legal provisions? Payments to be made for any interest charge rate supply is to be paid CGST, SGST, as we know, and for any interest rate supply, tax to be paid as SGST. In addition, certain category of registered persons will be required to pay the taxes called as TDS and TCS. This is liability to GST. Who is liable to pay GST? Supplier of goods and services generally, and specified cases like imports, notified suppliers in case of reverse charge mechanism, and notified cases of intrastate supply of services. The liability on GST may be passed on e-commerce operators. So various things, generally who all can pay the taxes. One is supplier. Definitely supplier will pay in most of the cases. And in case of reverse charge cases where the notification is applicable, recipient will pay. And third category is e-commerce operators. रिवर्स चार्ज फॉर्म में बेसिस समझ लिया कि सप्लायर अनऑर्गेनाइज्ड है इसीलिए रिसीवर पे करेगा. लेकिन जब सप्लायर भी अनऑर्गेनाइज्ड है और रिसीवर भी अनऑर्गेनाइज्ड है तब टैक्स छूट जाएगा. करेक्ट. सो इन दैट सिचुएशन देयर बी अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर. सपोज मैं कैब से ट्रैवल करता हूँ. आई यूज इट फॉर माय पर्सनल पर्पस. सो अगर कैब से ट्रैवल करूंगा तो कैब वाला तो चार्ज नहीं करेगा. And if I am not getting any benefit, I will also not pay tax under reverse charge. तो reverse charge पे ला करके भी कुछ फायदा नहीं है. But to connect these two people, some new concept of Uber and Ola have come in. What are they? Are they running the taxis? No, they are not running the taxis. They are only connecting the supplier and receiver. So they are called as aggregators. So when these aggregators organized हो गए, आप कुछ भी समझ लीजिए, whenever in any kind of a situation ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी के लोग बीच में आ जाते हैं तब ऑर्गेनाइज्ड लोगों के ऊपर दंड लग जाता है कि भाई तुम ऑर्गेनाइज्ड हो, तुम्हारे पास डेटा है, तुम टैक्स पे करो. तो ई कॉमर्स जो है सप्लायर का टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर और गवर्नमेंट को जमा करता है. टीडीएस और टीसीएस नेक्स्ट चैप्टर है तनु, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल में कि टीडीएस और टीसीएस कौन चार्ज करता है. What are the various modes of payment under GST? Payment of tax, interest, penalty, or any other amounts. कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो? थ्रू इंटरनेट बैंकिंग बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड. अब तक तो आया नहीं है, लेकिन बुक्स में थियोरेटिकली ये है कि
आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो डेफिनेटली, यूनिफाइड पेमेंट यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज है ओवर द काउंटर भी आप जाके पे कर सकते हो। बैंक के काउंटर में आपको चालान तो लेकिन पोर्टल से लेना पड़ेगा, पोर्टल से चालान लेके ओवर द काउंटर ऑप्शन डाल के आप बैंक में भी कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, कैश चेक या डिमांड ड्राफ्ट। लेकिन ओवर द काउंटर आप ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते हो, देयर इज अ लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज, यू कैन मेक पेमेंट ओवर द काउंटर ओनली अप टू 10,000 rupees. When is the date of credit? The date of credit to the account of the appropriate document. जैसे भी ऑनलाइन है तो इमीडिएटली हो जाएगा, लेकिन अगर आप चेक इशू करते हो आपको चालान तो आज का छापा मिल जाएगा, लेकिन आज का डेट पेमेंट नहीं कहा जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट विल बी द डेट व्हेन इट इज actually deposited or gets credited to the government account. Yeah. And this OTP जो हमने 10,000 कहा था, OTC का लिमिट applicable नहीं होगा in the following cases. कब? When deposit is to be made government departments. जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पे करना है, जब डिपॉजिट गवर्नमेंट मेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के पास अगर कैश ज्यादा है, इफ दे आर द गवर्नमेंट इज डीलिंग इन कैश, और उनको जीएसटी कुछ पेमेंट करना है, तब ये 10,000 लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इट मींस गवर्नमेंट को अगर जब जीएसटी पे करना हो, जैसे गवर्नमेंट वेरियस गवर्नमेंट, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने कुछ सर्विस प्रोवाइड किया है और उनको कैश में कलेक्शन मिला है, अब उसको बैंक में डिपॉजिट करके ही डिपॉजिट करना चाहिए जीएसटी गवर्नमेंट को, ऐसी जरूरी नहीं। दे कैन डिपॉजिट दिस 10,000 मोर देन 10,000 1 लाख रुपीज आल्सो, अपर लिमिट कुछ नहीं, एनी अमाउंट दे कैन डिपॉजिट इन कैश, तो उनके लिए 10,000 का अप्लीकेबल नहीं होगा लिमिट। When the proper second case, when the proper officer or any other officer authorized to recover outstanding dues from any person, whether registered or not, including recovery made through attachment, proceedings or sale of inventory. जब ऑफिसर कुछ रिकवरी के लिए आते हैं कि आपको टैक्स पे करना था, आपके ऊपर ऑर्डर सर्व हो गया, आपका डिमांड फाइनल हो गया, अब गवर्नमेंट को टैक्सेस रिकवरी करना है, आप पकड़े गए हो, आपके पास कैश है, आप बोल रहे हो मैं तो ये कैश तो है, मैं टैक्स पे करने दैट केस कैन यू से नहीं मेरे को तो ओटीसी में 10,000 का लिमिट है, नहीं, तब आपका पूरा कैश आप जमा कर सकते हो, स्पेसिफिक ऑथराइजेशन होना चाहिए ऑफिसर से, वो ऑफिसर बोलेगा ये स्पेशल सर्कमस्टेंस है, आप 10,000 के ऊपर भी ले लो, देन इट विल बी टेकन एंड डिपॉजिट मोर देन 10,000 आल्सो, देन proper officer or any other officer authorized for the amounts collected by cash check or demand draft during any investigation. ये जब डिमांड हो गया, ये डिमांड के पहले जब कुछ इन्फोर्समेंट या इन्वेस्टिगेशन करते हो एंड उनको कुछ एडॉक अमाउंट डिपॉजिट करना है कि ये कल तो डिमांड, इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट लिखा हुआ है, इसमें है रिकवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज, मतलब ड्यूज डिसाइड कर दिया व्हेनेवर, इसमें ड्यू जो है डिसाइड हो गया, इसमें ड्यू डिसाइड नहीं हुआ है एंड उनको कुछ एड ऑफ डिपॉजिट करना। फर्क ये है सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में डिमांड डिसाइड हो गया, थर्ड पॉइंट में डिमांड तो डिसाइड नहीं हुआ है लेकिन कुछ पेमेंट करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बच जाए। बोथ द केसेस यू कैन मेक डिपॉजिट मोर देन 10,000 इन कैश। फोर्थ इज डिपॉजिट टू बी मेड बाय पर्सन्स नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, डिपॉजिट्स टू बी मेड बाय पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, जैसे कुछ ट्रेड है जहाँ पे कैश डीलिंग ज्यादा होती है, तब कमिश्नर नोटिफाई कर सकता है कि ऐसे लोगों को आप कैश से थ्रू भी पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, यूपीआई भी नहीं है, यूपीआई है ना सुमित, इन द प्रीवियस स्लाइड वी हैड सीन दैट यूपीआई इज परमिटेड, यूपीआई है ना, यूपीआई के बिना कहाँ जिंदगी जी सकते हैं आप, यूपीआई आल्सो इज वन ऑफ द मोड ऑफ पेमेंट, समझ गए।
क्या है उसको कैसे पे करते हैं, और कुछ मतलब कैश क्रेडिट, कैश के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, या फिर नेट बैंकिंग। ऑल थ्री पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड चालान होगा। चालान का नंबर क्या है? तो अभी वॉइस ठीक है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम इज ऑल सॉल्व नाउ। ठीक है, तो वंस वी सेव द चालान, तो फिर चालान का आइडेंटिफिकेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन होता है एक 14 डिजिट सीपिन नंबर से, 14 डिजिट कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हु कैन जनरेट चालान? आप जनरेट चालान कर सकते हो, या फिर एक आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चालान कर सकता है, या फिर डिमांड आपका ऑफिस के नंबर से चालान जनरेट कर सकता है। और एनी आईपीपी करना
अभी नेटवर्क ठीक है. So we are discussing on the challan and who can generate the challan. There are four category of people who can generate the challan. First is the taxpayer. Second is the authorized representative of the taxpayer. Third is a departmental officer. That is when the officer comes, he can generate a challan. Or in case of any other person paying tax on behalf of the taxpayer. These are the four people who can generate the challan on your behalf. You can generate single challan for all types of payments, that is CGST, SGST, IGST, and cess. What is the validity period? Till what time is this challan valid for? It is valid for 15 days. After 15 days, the challan gets expired. So within 15 days, you have to pay. What happens if I don't pay? It's okay, it will still be there. लेकिन आपको record फिर से enter करना पड़ेगा. Not a big hassle, but system में storage की limit होती है ना. That's the reason this challan can be saved for up to 15 days. Challan would not have a jurisdictional location code. Challan में आपका location code नहीं है, सिर्फ GST number डालने पे directly आपके GSTN पर चला जाएगा. Unregistered person, casual taxable person, non-resident taxable person, उनको जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का कहा हमने कि जब वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बिफोर रजिस्ट्रेशन बिजनेस करते हैं उसके पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर देगा कि आप कुछ डिपॉजिट कीजिए तब मैं रजिस्ट्रेशन दूंगा. और जो सीटीपी या एनआरटीपी है वो बोलेगा आप रजिस्ट्रेशन की दीजिए तब मैं पे करूँ. तो इसको रिजॉल्व करने के क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के पहले उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया उनका पता लगना मुश्किल है. इसीलिए बिफोर गिविंग देम रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ उनको पेमेंट जमा करना पड़ेगा. ये कैसे जमा करेंगे, ये उनको एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है. नॉट द रेगुलर GSTIN नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जाता है, एक सिर्फ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है. ये टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पे उनको जमा करना है. और जैसे अब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया है, अब उसको जीएसटी जमा करना है. तो वो कैसे जमा करेगा, वो जमा करेगा ऑन द बेसिस ऑफ this unregistered person will deposit the tax on the basis of temporary identification. Officer को एक temporary identification number देता है. Then challans generated and no payments made, what will happen? Nothing. The challan gets expired. Nothing happens after that. You have to make the payment. You have to generate a new challan. This is only theoretical, no problem. What are the major heads जब आप challan select करते हो? When you make the payment, there are major heads and minor heads in the challan. Okay, what are the major heads? TGST, SGST, IGST, and cess. तो ये है major heads because main category. फिर main category select करने के बाद आप क्या payment कर रहे हो वो भी जानना जरूरी है. तो उसके लिए once you select the major heads, फिर minor heads आते हैं. Minor heads में आता है tax, interest, penalty, fees and others. Okay, these are the minor heads. आपको मेजर हेड और माइनर हेड सेलेक्ट करना बहुत जरूरी था. अगर आपने मेजर हेड सेलेक्ट कर दिया, CGST टैक्स पे करने की जगह इंटरेस्ट पे कर दिया, तो यू कैन नॉट यूटिलाइज दैट पेमेंट फॉर टैक्स पेमेंट. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. बट आफ्टर 1 जनवरी 2022 आप जब भी कुछ पेमेंट करते हो, देन 49(9) section 49 subsection 9 permits the correction of the major head or permits the correction of the minor head also by filing this form called form PMT-09. जब आप फॉर्म PMT-09 पे करोगे में फाइल करोगे और आप बोलोगे कि मुझे CGST से IGST में ट्रांसफर करना है, तो आप कर सकते हो. सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर करने की प्रोविजन नहीं है. सपोज किसी ने आपको IGST पे किया है, क्रेडिट दिया है, आप उस IGST को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, आपका SGST का क्रेडिट है, तो क्या आप IGST से यू कैन यूटिलाइज IGST. दैट इज डिफरेंट थिंग. Utilization of the credit is different from
ट्रांसफरिंग इट। ओके, आपको मेजर हेड से माइनर हेड आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं कर सकते। So any kind of a transfer can be happen is possible in the electronic cash ledger. That too from 1st January 2020. So उसके पहले क्या था? You had to make payment under correct major head and under the correct subhead. अगर गलती से भी कुछ गलत डाल दिया तो फिर उसका एक हेड से दूसरे हेड में आप यूज नहीं कर पाते। Okay? A registered person can transfer amount from one head to a major head in the electronic cash ledger or transfer any amount available in the electronic cash ledger to electronic cash ledger for GST of a distinct person. Distinct person का मतलब पता है ना? That when you have one PAN and you have various branches, correct? तो फिर from one branch to another branch, from one state to another state, you can transfer your credit. Which credit you can transfer? You can transfer only IGST from this state to another state. CGST of this state you cannot transfer to another state. So take an example that I have a distinct person in one in Bangalore and another distinct person is in Mysore. So can I transfer the credit of IGST from this Bangalore to Mysore? Did you understand my question? No, Pooja says no. इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर को हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है भाई समझ। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर का अमाउंट जो है एक मेजर हेड से माइनर हेड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा था, मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 1 लाख पड़ा है, मैं आईजीएसटी जो क्रेडिट है इलेक्ट्रॉनिक नॉट क्रेडिट कैश लेजर में आईजीएसटी के अंदर पड़ा है, कैन आई ट्रांसफर दैट to another person which is my branch in Mysore? Yes, I can do it because we are distinct person. We are distinct person. I can transfer the balance in my cash ledger to my distinct person in Mysore. Possible here. Another question. I have a branch in Karnataka. I have a distinct person, or that's a branch in say Jammu Kashmir. Can I transfer the IGST balance from Karnataka to Jammu?
Yes. Okay. What are you saying? Is it possible or not possible? It can be a transfer balance from one to another after payment of the expenses. First balance can be transferred to destination. Yeah, it can be transferred in time because electronic cash ledger is your cash ledger. Electronic credit ledger restriction here that you have to make payment of your previous taxes, then you have to pay. But cash ledger is like your bank account. So you can transfer it to the distinct person within the state and to a distinct person outside the state. Anything is possible. And how will you transfer it? Again through PMT 09. तो तनु कैश लेजर और क्रेडिट लेजर क्या है? सिंपल है, जब आप कुछ पेमेंट करते हो तब वो सभी पेमेंट जो आप पे करते हो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाता है और आपकी जो क्रेडिट मिलती है वो सब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाती है। ये समझ में कि ये जमा कैसे होता है। अब यूटिलाइज कैसे करते हो आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को? कुछ भी टैक्सेस पे करने के लिए यू कैन यूटिलाइज, एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस ओनली. But electronic cash ledger you can make payment of taxes, interest, penalty, fees, everything can be paid from electronic cash ledger. Next, GST payment of taxes by the normal taxpayer is on monthly basis by the 20th of the succeeding month. Cash payments will first be deposited in the cash ledger and taxpayer shall debit the ledger to make payments monthly, which will go from cash ledger to the liability register. Payments can also be debited from the electronic credit ledger. Correct. जैसे March month का payment है, you will file the return on 20th April and payment on the 20th of April. Sales made in March, payment will happen on the 20th of the next month. Composition taxpayer will need to pay the taxes on a quarterly basis. Various terms which have been used, that is your workflow for payment, simple workflow. To understand this workflow, see this chart. First is, what is DRC3 payment? Okay, so when you have any liability, when the officer has determined some liability, you have to make that payment, right? What are the modes of payment of taxes to the government? Electronic cash ledger. Now, from cash ledger, how the government will take the balance? One is through filing return. When you file a return, the liability, you're self-declaring that this is my sales, this is my liability. So when you file a return, amount gets taken off from your cash ledger. Now, sometimes you have an order is generated and the liability which is created by the government and they want to make the payment. This payment happens through this Chalan or DRC03, wherein you are permitting that the balance in your cash ledger should go to the government through this Chalan. This Chalan is called as DRC3 payment. The best part of DRC3 payment is can utilize your DRC3 from your cash ledger and from your credit ledger. From your credit, because DRC, we have said credit ledger can be used for making of payment, right? So you can utilize your credit ledger for making payment of your taxes also. So the DRC3, you can make payment from cash or from credit ledger. Whether electronic credit ledger can be transferred to distinct person? No, only Krishna. Only cash ledger can be transferred. Credit ledger balance cannot be transferred to a distinct person. This is your credit. You have to take it. You cannot pass on this benefit to anybody else.
How does the payment happen? First is taxpayer goes to the GST network, through his GST login, and then he generates Chalan. Once he generates Chalan, what he gets? He gets a CPIN number. Then he chooses to make the payment through one of those modes, either net banking, UPI, or credit card or debit card. Then he makes the payment. Once he makes that payment, the payment data goes to EFPB, the focal point of contact. Each bank will have a FPB. It goes to that FPB. Then from there, it goes again to the GST network. Once the bank receives the payment, then it goes to the GST. And then the taxpayer can generate a credit to the taxpayer's ledger, and he can generate a Chalan, final Chalan of payment. Credit ledger not to transfer another person, but credit ledger can take refunds. Okay. No. So whatever balance is there, transfer it to a distinct person, but you cannot transfer to any other person. Like even to transfer to a distinct person, you can only transfer cash balance and not the credit. So electronic credit ledger you cannot transfer, but can you claim refunds? No, you cannot claim. Saying that okay, this is the balance you give it in. So government will keep giving the credit as cash. Then our situation also will become like a country like Sri Lanka, wherein government is giving so much funds that they have become bankrupt. So the government cannot give the cash instead of credit, but they're given this benefit of giving that credit balance as refund only in two situations. One, you are making any zero rated supply, that is many exports you're doing, or if you're supplying to SEZ, all of that zero rated supply, in that case, you can claim refund, or you can claim refund when you have that inverted duty structure, which means your input rate is higher and your output rate is lower. You're purchasing at 18% and you're selling at 5%, then your credit gets rated. Only in these two situations, you can get a refund of the balance of credit what you have. In all other cases, you cannot claim it. Only in these two situations, you can claim the refund. Interest penalty can be paid from electronic credit ledger? No. Electronic credit ledger cannot be paid. You cannot pay interest and penalty from the electronic credit ledger. What are the rules for, somebody was asking what are the rules for utilization? Here it is. Amounts available in cash ledger can be utilized under respective heads for the following tax payments: tax, interest, penalty, fees, or any other amount. And amount in the electronic credit ledger will be used for payment of taxes. And electronic credit ledger cannot be utilized for payment of tax under reverse charge mechanism. Very important this point. RCM payment. And we have to first make the payment of RCM and claim back the credit. So you cannot utilize the credit balance itself, electronic credit ledger balance, to make payment of taxes under RCM. To make payment of taxes under RCM, you have to utilize your cash ledger. If IGST input credit can be offset to CGST and SGST output, yes. IGST you can utilize for IGST and CGST. You have seen that bucket charts, right? IGST can be utilized for IGST, CGST, and SGST. CGST can be utilized for CGST and IGST, and SGST can be utilized for SGST and IGST. Electronic input tax credit ledger. Okay, these are the input tax credit ledger. We'll go to the important points now. Yeah, IGST utilization cases are there. Somebody is asking, so exactly you're asking question exactly when I'm getting the presentation. IGST can be utilized for IGST liability, and IGST credit can be used to set off SGST and CGST and SGST in any proportion. CGST for CGST liability. Then any CGST credit available can be offset with IGST liability. SGST liability with SGST, then SGST with IGST in any proportion. No cross utilization of credit between CGST and SGST.
Clear, Sriram? I think this exactly answers your query. Very nice. Tony Krishna's question is electronic credit ledger has a balance, but business discontinued for a time. We can later restart. Can I avail electronic credit ledger balance? Yeah. If you are discontinued, you're filing your returns, you're keeping your certificate active, keeping your registration active, you can use it for the new business as well. I have a question regarding availability which is posted. Can you please reply? Unikrishna, your question is on that contractor, right? Yeah. Previous session class, a query or company engaged a contractor for works contract involving construction of civil structure. Whether the company is supposed to obtain the details of contractor sourcing bills to ensure that whether any unregistered supply bill involved, as we are seeing in real estate builders, whether ITC civil structure construction for electronic control room for plant and machinery can be available. No, the question is really confusing. Can you please break the question? I think two questions you have merged. Ask one question at a time. While we proceed further, what I've said here is depicted through this chart. IGST can be utilized for payment of IGST and CGST. This IGST can be utilized with IGST and CGST. Only IGST credit can be utilized for payment of CGST and SGST. CGST with CGST, then with IGST. There is no another diagram for, no other flowchart for SGST because CGST cannot be utilized for SGST. Similarly, SGST can be utilized for SGST, then with IGST. Like with like, then dislike. This is all theoretical, fine. This is fine. Electronic liability register. This chart is very nice because it depicts how the flow happens. Electronic credit ledger, electronic cash ledger, debit and credit we know. What happens is other payments from electronic cash ledger is you can make payment for TDS, TCS, RCM liability, any amount payable under Section 10, which is composition taxpayer, and interest penalty fees or any other. What happens in your electronic liability register is its amount payable will and the amount what will get credited is your electronic credit ledger. So debits will be the amount payable, credits will come from these debits. That's why electronic credit ledger, cash ledger will be zero. Once the amount gets reduced from here, it will get added here, and this will also become zero. This is very important. Amount remaining in electronic cash ledger after payment of taxes can be claimed as a refund. But balance in electronic credit ledger cannot be claimed as a refund except in two cases, that is inverted duty structure and zero rated supply. Interest. Interest says that interest shall be payable if the person fails to pay the tax. The government. If you delay the payment of taxes to the government, then you have to pay interest. Okay, interest is notified at 18%. And then new provisions introduced wherein says that on the net cash liability you have to pay. What does this mean? If you have a liability of 1 lakh rupees on your output tax, ठीक है, लेकिन उस मंथ में आपने रिटर्न लेट फाइल की, तो फिर how much will be the interest applicable on? It will not be on 1 lakh. Now in that month you have a balance in your electronic credit ledger and you are utilizing 60,000 rupees of your payment of that 1 lakh through your credit ledger. Then interest will be payable not on that 1 lakh. Interest will be payable only on 40,000 rupees. Okay, not on full 1 lakh. You have to pay interest. You have to pay interest only on the 40,000. Because 60,000 is through payment through electronic credit ledger. So you don't have to make the interest payment on that 60,000 rupees. Only on that 40,000, you have to make payment of interest.
Okay. Before, so whether GST TDS under Section 51 can be paid from electronic credit ledger? No. GST payment, the TDS payment also has to be made from electronic cash ledger. Contracting sourcing materials from unregistered vendor, okay, and giving bills to company with 18% GST in volume works contract, whether company to ensure that minimum 80% purchase from registered vendor. Yes, the company who is claiming getting this invoices, the company who is doing the works contract services, who is doing construction of building, they will have to ensure that this purchase, not the purchase from whom that purchaser is purchasing. This purchase, what I'm doing, is he charging GST? Yes, he's a registered person. Is he not charging GST? He is a registered person. They will have to have the control. Second question, civil structure made for electronic control room for opening a machinery separately from machinery. So if you have a control room which is required for the machinery, still it is part of the plant and machinery, right? Because without that civil structure, you cannot run that machinery. That's where that ITC will be allowed. Okay. So let's take a break of 10 minutes and we'll assemble back at 7:30.
Welcome back. We had some questions from some students. Whether GST TDS can be paid from your credit ledger? Yes, it cannot be paid. TDS under GST has to be paid from electronic cash ledger itself. Then next question was on civil structure, which is made for electric control room for opening of machinery. Yes. So if the machinery is such that there is a vibration and it cannot stand on its own, you have to do a civil structure. Then that civil structure is part of the plant and machinery that will be allowed. If it is not required and it can work independently, then that civil structure is not relevant. Then that civil structure will be disallowed. Okay. Let's proceed with section 51. It says that every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this act but fails to pay the tax within the prescribed period shall, for the period for which the tax or any part of the tax remain unpaid, shall pay interest at such amount not exceeding 18%. Okay. Now, that interest, will it be on gross or net? Okay. Gross means, like I gave you an example of 1 lakh, that is the gross liability. Of that, 60,000 is payment through credit ledger and 40,000 payment is through cash ledger. So net payment is 40,000 because 60,000 you're offsetting from your credit. So you have to pay interest on your net liability. Like say in this case, sales for the month is 15 lakhs, purchases and expenses for the month is 10 lakhs. What is the gross liability and what is the net liability? Simple question. Sales for the month is given, purchase for the month is given. Come on, come on. We have less time and we need to cover TDS and TCS also. Sriram is saying 15 lakhs is gross and 5 lakh is net. What are my other friends saying? Gross 15 lakhs, net 5 lakhs. Okay. Good attempt, Swaroop. Others? Do you think this is a CA question? Will I give us such a simple question? Pooja is also saying gross liability is 15 lakh, net liability is 5 lakh. Think, think differently. What is hidden in this question? Have we read the question completely? 15 lakhs gross, net 5 lakhs. Kunni Krishnan also, Sumit also. I have not yet got the right answer. Okay, shall I give out the answer? Now you have got the thing correctly. So first attempt, be very careful when you do it. Give the percentage. Yes. GST on 15 lakhs is the gross liability and GST on 15
minus 10, that is 5 lakh, is the net liability. So don't go straight away with the one word. Go with the complete word. Gross liability. Liability on 15 lakhs is the gross liability, and 5 lakhs into the tax percentage is the net liability. Good. Now we have got it. Yes, yes. Right, Pooja. Okay. So assume the GST rate is 18%. Then your output tax is 2,70,000, which is your gross liability. Input tax is 1,67,000. Okay. Is this correct? May not be correct, but because there are purchases and expenses, not everything will be at 18%. Correct? So it would have various rates. That's why in my example, gross output tax is 2,70,000. Input tax is 1,67,000. Now, what is the gross liability and what is the net liability? Very good. Correct answer, Sriram. Very simple. Others, come on. Now tell me what is the gross liability and what is the net liability. Correct. Correct, Pooja. Correct, Krishnan. Yes. So now we know that gross liability is 2,07,000, net liability is 1,03,000. Okay. Now, why that is relevant is because the interest, okay, this proviso 51 says that you have to pay interest even if you're filing the returns late on the net liability of 1,03,000, not on 2,70,000. Why? Because we are offsetting credit and credit is already there in the credit ledger, which I cannot utilize. I can withdraw it. Nothing I can do it. It is equivalent to the amount which is there with the government. That's where that case law was relevant, that they fought that interest should be on net liability, and the government has made a change and they have levied interest on the net liability with effect from July 17 itself. It was a retrospective amendment. So, what is a retrospective amendment? When a law is changed from today, but the effect of that is given prior to that change, that is called a retrospective amendment. So this retrospective amendment happened and interest will be payable on the gross, not on gross, on the net liability. Okay. Now see, payment of tax and filing of monthly returns for April 2019. Due date is 20th May. So what happens in that case? In case one, payment and filing was done on 18th May. Gross output tax was 10 lakh and ITC was 7 lakhs. What is the interest which will become payable? My friends are saying 100% GST and 80% taxable value paid to the vendor within 180 days. Can I avail entire ITC even though payment of 20% paid after? No.
that condition of 16 second provision to section 16 to 100% payment of the tax you have to be proportionate, you cannot claim it. Unni Krishnan is saying interest will be calculated on 3 lakhs. Tannu Vishwakarma is saying 18%. No, boys, no. Few others have given the correct answer that tax liability 3 lakh is payable in May and I've paid it before May. So no interest liability because due date is 20th. I have paid it before that. So why interest? No interest liability. Okay. Second case, payment and filing done on 20th August 2019. Gross output tax 10 lakhs and ITC is 7 lakhs. What will be the interest payable? You don't have to do the actual calculation. Just tell me the workings. Just I want to understand your idea. How do you work the interest? Interest will be on 3 lakhs, which is the net liability, into 18% into 100 divided by 365. That interest calculation, when you do, 18% is the interest rate per annum. You have to calculate based on the number of days. So whatever is the net value and that net taxable value, which is 3 lakhs into 18% into 100 days divided by 365 days. Why 100 days? Number of days of delay, which is from 21st May. April का sales हुआ है, right? 21st May to 28th August makes it 100 days. Clear? Not on 3 months. You cannot round it off to 3 months. You'll have to take it the number of days because if you do number of months, then you will pay more interest. Right. Awesome. On the right track. Okay. So 88B. Now 88B says when you calculate interest, okay, if the tax has been belatedly paid through credit balance on account of delayed filing of return before commencement of the proceedings, then interest is to be paid for the period of delay in filing the said return beyond the due date up to the date of filing returns. Okay, this is what we have calculated. Tax paid by debiting the electronic cash ledger. Okay, because tax paid by debiting the electronic cash ledger, the interest will be paid for the delayed period. Now, in other cases where interest is payable on delay in payment of tax covered by 51, amount of tax which remains unpaid. So, on what basis you will pay the interest is what 88B is saying. Okay, first we saw section 50. Now, 88B is saying that how do you calculate interest in specific cases? When you are paying tax by debiting your electronic cash ledger, then interest is to be paid for the period of delay and the amount of tax which remains unpaid. If you have paid partial amount, partial unpaid, then on the partial unpaid amount, you will calculate the interest. Then 88C is saying amount of input credit wrongly availed and utilized. In that case, period for if you have utilized the credit wrongly and now you have to reverse it. You had to claim 1 lakh rupees. By mistake, you have claimed 1,50,000 rupees. To the extent of 50,000, this is a excess availed input tax credit. Okay, this excess availed input tax credit, you will have to pay interest from the period starting from the day when you have utilized the credit till the date of reversal. Okay, that is what Rule 88B is saying. Let's take this example. Payment of tax and filing of monthly return by regular taxpayer for April 2019. Due date is 20th May. For April month, supplies are declared in the tax period pertaining to April itself. Amount of 10,000 rupees. Actual filing date happened on 1st June. Payment is made through electronic credit ledger of 6,000 and electronic cash ledger 4,000. Interest will be calculated on what?
Come on, friends. On what value will you calculate the interest? Come on, where have you gone? Is there network problem? On 10,000 at 18% for 10 days. Why 10,000 rupees, boys? Why 10,000? Is it on 10,000 or 6,000 or 4,000? Where's everybody gone, not answering? This is a simple issue. Yeah, more on 4,000 for 11 days. Correct. Correct. Sriram Puja, you're right. Interest will be on 4,000 rupees for the number of days of delay, which is 11 days. Now, April, your return, you're filing for April. Now, supplies declared in tax period pertaining to March. March sales you made, you are including that in March returns, delay happened, that we will calculate. Now, March sales, you're reporting that in April. Which value? 15,000. Your total return is not 15,000. In April month return, you'll have April month sale also. In our example, we are only considering sales of March, which you're reporting in April. And this you're paying through electronic credit ledger 10,000 and electronic cash ledger 5,000. Now, interest will be calculated on what value? Rupees 5,000. Since this 88B, that's what this 88B says, which I will read now so that we'll understand 88B now. In other cases where interest is payable on delay in payment of taxes, period starting from the date on which such tax was due. When was the tax due? March sales you make and you include it in April. So everybody will do it like that. I don't have money this month, so I'll include it in next month and I will pay less interest. That is not correct, right? So March sales, if I've included in March return, then on the net liability. But if I've included in next month, then the interest will be on the gross liability only. Okay, it will be on the gross liability. Fine. That's why in this case, interest has to be paid on the gross amount of 15,000, not on 5,000, because last month's sale I've included in this.
और दिस समझ में आ गया ना पूजा और तनुश्री कि अगर मैं इस महीने का सेल्स इसी महीने के रिटर्न्स में दिखाता हूं और लेट करता हूं तो मुझे नेट लायबिलिटी पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर मैंने इस महीने का सेल इस महीने के रिटर्न्स में दिखाना भूल गया हूं, अगले महीने में दिखाता हूं, तो फिर आपको नेट लायबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 15,000 into 18% into 100 by 365, करेक्ट। अगेन 100 only days, is it because मार्च का आपको अप्रैल करना था, अप्रैल मई, it will not be 100, eating from first 21st April, 21st April, 21st May, June. So it's not 100 days. It will be less than that. April to May, and then just 30 days, 30 plus 10, make it as 40 days. It's not on 100 days, it is 40 days. ठीक है, let's move ahead. ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, दीज आर ऑल थियोरेटिकल थिंग्स कि जो भी गवर्नमेंट का क्रेडिट हो इधर से उधर ट्रांसफर करेगी। ITC of CGST used for payment of IGST. Amount equivalent to ITC so used is transferred by the central government from CGST account to AGST account. And ITC of IGST used for payment of CGST. तो फिर amount equivalent to ITC so used is transferred by the central government from IGST account to CGST account. So that is what I'm saying कि IGST जो है वो ट्रस्ट बीच में ट्रांसफर करने का ही काम करता है। Okay, Pooja's question is, but sir, if 2 month not showing in return, then interest will be calculated on net basis or gross? Will still be on gross only. अगर आपका सेल आप इस महीने दिखाते हो तो नेट लायबिलिटी, अगर आप किसी मंथ में दिखाते हो या आगे भी नहीं दिखाते हो और आप वॉलेंट्री पे करते हो विदाउट शोइंग इट एनी रिटर्न, फिर भी आपको ग्रॉस लायबिलिटी पे ही पे करना पड़ेगा, नेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ विल गेट इनटू TDS and TCS किसके ऊपर लगेगा, कब लगेगा? I have collected GST on 1st April from the customer and I'm remitting to the government next month 20. Yes, and I am delaying for 10 days. Hence, interest to be remitted from collection date. No, sir. No, no. It is income tax, but this is not income tax. So you don't have to pay it from the collection date. You collect on 1st April or 30th April. The due date for payment is 20th itself. 50 दिन तक आप use कर सकते हो. Yes, you can keep it for you for 50 days. When the due date comes, that day you make the payment. Not like TDS. ठीक है. Now, TDS and TCS. Okay. Tax deducted at sold. What is TDS? It is an amount which is an Indian withholding tax. Okay. Because in India it's called TDS.
In foreign, it's called withholding tax. So TDS is an Indian withholding tax that remains collecting tax on income, dividends, or assets acquired or asset sales by requiring the payer, okay, who is pays to the receiver. Now, if I am selling it to you, you have to pay me. So you are the payer. So you have to pay some portion of amount which you pay me to the government. That is called as tax deducted at source. At the source itself, you're deducting some amount and paying to the government on my behalf. This is TDS. So if there's an invoice, so we'll talk on normal TDS. Then we'll come to GST, TDS, and TCS. Normal TDS is when I raise an invoice for 1 lakh rupees, I have to pay to the government as TDS 10,000 rupees and pay to the vendor 90,000 rupees. So ultimately, what should this person pay? He has to pay 1 lakh. Instead of paying full 1 lakh to this receiver, he's paying 10,000 to the government and 90,000 to him. Okay, this is the concept of TDS. What are the advantages of TDS? Regular flow of income. Government don't have to wait for everybody to file the returns. उसके पहले advance में उसको credit मिल जाएगा. If TDS applicable to GST, yes, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं श्रीराम. That TDS what we discuss under income tax, that is difference. This TDS what we discuss under GST, we will discuss what TDS is applicable for GST. Have TDS for income tax under profession, salary, rent, contractors, and everything. Similarly, you have a special TDS provision under GST, which we are studying now. इतनी देर से मैं बोल रहा था भाई साहब आप क्या कर रहे थे? So whatever I was explaining, you didn't understand then. No problem. Let's catch up. More half an hour session. Please pay attention. So the TDS and TCS provision should be clear cut. How UIN will discharge taxes? UIN को कुछ supply करता ही नहीं है वो. Correct? So he does not have any taxes to be discharged. Whatever taxes is charged to him, उसकी UIN number से वो refund लेगा. Only UIN को special benefit मिला है कि बेटा track होना चाहिए ना. So he will give his UIN number, whatever charges he GST which it will get accumulated in this UIN number and he will claim refund of it. Okay. Now clear. Are we ready to understand the GST in detail in the TDS and TCS? Come on, I need response. For TDS TCS, we have to take separate registration. Yes, we will have to take separate TDS and TCS registration. ठीक है. Awesome. चलते हैं. एडवांटेज ऑफ टीडीएस, गवर्नमेंट को टैक्स पहले ही मिल जाएगा. ऑडिट ट्रेल इज क्रिएटेड कि मैं टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ आपके परचेज के ऊपर, तो फिर आपको परचेज भी डिक्लेयर करना पड़ेगा. अगर परचेज डिक्लेयर करोगे तो सेल भी डिक्लेयर करोगे. सो इट क्रिएट्स अ ऑडिट ट्रेल. मोर इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम आ रहा है वो तो एडेड एडवांटेजेस है, बट मेन एडवांटेजेस इट क्रिएट्स अ ट्रेल कि किसने किसको बेचा. अगर परचेजर बोलेगा नहीं मैंने उनसे परचेज ही नहीं किया, वो बोलेगा सामने वाले ने आपसे टीडीएस डिडक्ट किया है, तो इट बिकम्स अ ऑडिट ट्रेल. तो फिर सामने वाला टैक्स से बच नहीं सकता. ठीक है. एक्सपैंड द टैक्स रेट, क्योंकि अगर मैं किसी को सेल करता हूँ और मेरे ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने का है, ठीक है, मैं किसी को परचेज करता हूँ और मेरे को टीडीएस डिडक्ट करने का है, अगर उसने रिटर्न नहीं दिखाया तो ट्रैक हो जाएगा. इस वजह से क्या होता है, जो टैक्स कलेक्शन का नेट है, जो जीएसटी का स्प्रेड है, more people will be registered under GST. That's why it will expand the tax net. And then with integration of data, there exists an audit trail. Okay. With integration of this data, there exists an audit trail. पूरा trail का झाल, that whole web of tax mechanism. Okay. 51 TDS और TCS में डिफरेंस. TDS डिडक्ट होता है सेक्शन 51, TCS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 52.
TDS is under 51, TC is under 52. TDS refers to tax deducted, or yeah, tax deducted when recipient of goods makes payment to the supplier. ओके रिसीपियर है वो रिवर्स चार्ज तो पे नहीं कर रहा है, सप्लायर को ही पे करेगा, लेकिन सप्लायर को पे करने से पहले लाइक हाउ वी आर डिडक्टेड पार्ट ऑफ द अमाउंट काट के गवर्नमेंट को दे देगा, बैलेंस इसको पे करेगा. एंड टीसीएस रिफ्लेक्ट्स टू द अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर. ओला ऊपर का ड्राइवर है और आप कस्टमर हो, ठीक है, इसमें टैक्स आप डिडक्ट नहीं कर रहे हो. इन दोनों को कनेक्ट करने वाला एक है इसके ऊपर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर. करेक्ट. ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है कलेक्ट करता है पैसे कस्टमर से. जब ये कस्टमर से 100 रुपीज ये ट्रैवल का कलेक्ट करेगा, 100 प्लस 10 रुपीज और प्लस 18 रुपीज, 5 रुपीज यार, कार के केस में तो 5 रुपीज है, 100 प्लस 5 कलेक्ट करेगा कस्टमर से. करेक्ट. कलेक्ट कर रहा है, क्या कलेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. ही विल कलेक्ट दिस टैक्स एंड रेमिट टू द गवर्नमेंट. जो किसको जमा करना चाहिए था, ये कार पर्सन को जमा करना था, लेकिन कार पर्सन के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी निकाल के ई कॉमर्स के ऊपर डाल. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज अ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. ठीक है. अल्टीमेटली एक्स्ट्रा कौन पे कर रहा है, कस्टमर पे कर रहा है. Correct. So TCS is levied on an e-commerce operator when he collects any amount on behalf of the supplier. Okay. TDS is tax deduction at source. TCS is tax collection at source. Both of this is reflected in the electronic cash ledger. In case of TDS, it is reflected in the ECS of the deductee, and in case of TCS, it is reflected in the electronic credit ledger of the supplier. समझे? यस. अभी ठीक है तनु, आवाज ठीक से आ रही है? Invoice appearing in GST 2B, but there is a dispute between vendor and company, payment not admitted for payment. But once the November 30th over, how to avail ITC in such a case if all such funds payment due to him? Oh, if there's a dispute, unfortunately, there is no exception, Uni Krishnan, that if you have dispute, you can pay later on. ऐसा provision नहीं है. So you have to make the payment by the 30th of November and then claim it. If you've delayed it, your credit gets lost. ठीक है. सो वी अंडरस्टूड टीडीएस एंड टीसीएस इन बेसिक्स, फिर डिटेल में जाएंगे, बट आपको एट द थ्रेशोल्ड समझ में आ गया व्हाट इज टीडीएस एंड टीसीएस. Who is liable? First, we'll understand TDS and GST in detail. Who is liable to deduct TDS? Any department or an establishment of the central government, state government. जैसे टीडीएस का लायबिलिटी इनकम टैक्स में एवरी इंडिविजुअल हु इज डूइंग अ टैक्स ऑडिट, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म हु इज रजिस्टर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, कंपनी, एलएलपी, सबके ऊपर है. जीएसटी के अंदर टीडीएस लकीली अब तक सबके ऊपर नहीं है. It is only on department or an establishment of the central government or state government, local authority, government agencies, or any other person or category of person has been notified by the government. लेकिन फिलहाल तो इन तीनों के ऊपर ही है. Deductors who are notified are following are the persons जिसका notification हुआ. Any authority or a board, again government ही है. If there's any board or authority which is set up by an act of the parliament established by any government with 51% or more participation by of equity of control to carry out any function. Okay, so any authority or board जो है, जैसे कॉफी बोर्ड हो गया, वो गवर्नमेंट का ही है क्योंकि गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल है. ठीक है. ऑल ऑफ दिस इज they are the persons who are notified. Then society registered establishment by the central government or state government, यहाँ पे भी गवर्नमेंट का ही है. और एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनसे जब आप डीलिंग करोगे तब वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे. Category of persons who are not liable to deduct TDS. Following are the persons who are not liable to deduct TDS when goods are supplied from a public sector undertaking to another public sector undertaking. तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिडक्ट करना है. करेक्ट. दैट्स व्हिच वी हैव कंसीडर्ड हियर कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को टीडीएस डिडक्ट करना है. जैसे ओएनजीसी हो गया, आईओसी, जो पब्लिक के कंट्रोल में ये कंपनीज है, सेक्टर अंडरटेकिंग्स. जब ये पीएसयूज एक और पीएसयू से सर्विस लेती है तब टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है.
Then, when supply of goods or services takes place between one person to another person specified in 51(1) ABCD, मतलब इन लोगों एक गवर्नमेंट एक और गवर्नमेंट को जब करेगी तब टीडीएस क्यों डिडक्ट करेगी? नहीं करना है। जब गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टी से कुछ लेती है तब टीडीएस डिडक्ट करेगी। ठीक है। हु आर द डिडक्टीज? मतलब मैं सप्लाई कर रहा हूँ 50 रुपए का, क्या टीडीएस डिडक्ट करेगी? नहीं। इसलिए हु आर द डिडक्टीज? द डिडक्टीज आर द सप्लायर्स हुज टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज। अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में 2,50,000 रुपीज से ज्यादा कुछ सप्लाई करता हूं, देन आई एम लायबल टू गेट टीडीएस डिडक्टेड। दिस वैल्यू इज एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड सेस। ऐसा नहीं कि मैंने 2 लाख किया, टैक्स मिला के 2.5 लाख हो गया, टीडीएस डिडक्ट करना है, नहीं। अगर बेस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज द रेट ऑफ डिडक्शन? द रेट ऑफ डिडक्शन वुड बी 1%। अच्छा, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, टोटली 2% डिडक्ट करना है। एंड अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो डायरेक्टली 2%। नो टीडीएस। फिर भी अगर है, टीडीएस कब डिडक्ट नहीं करना है? वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ द सप्लाई both are in the same state but place of recipient of supply is another state, then no TDS to be deducted। इस स्लाइड में और कुछ नहीं है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। कब टीडीएस डिडक्ट करना है, कब नहीं करना है, ये समझ लेंगे तो फिर कब करना है बाकी सब केस में टीडीएस डिडक्ट करना है। Where the location of the supplier and the place of supply are in the same state but place of the recipient। अब तीन चीजें समझिए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तीन चीजें हैं। Where the location of supplier and place of supply are in the same state but the place of recipient is another state, then no TDS shall be deducted। समझ लीजिए, मैं यहाँ पे रोड लेइंग का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, गवर्नमेंट देती है कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्टर आता है और ले कर लेता है। जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तब टीडीएस डिडक्ट करूंगा, करेक्ट। नाउ इफ दिस कॉन्ट्रैक्टर आउट स्टेशन से आता है, ठीक है, वो है एक फेमस कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम दिल्ली, ही इज कम टू बैंगलोर, लेट डाउन द रोड, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट बट रिसिपिएंट का जो है वो अलग स्टेट में है, रिसिपिएंट अलग स्टेट में है, तब टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिसिपिएंट, अगर सपोज मैं हूं रिसिपिएंट और मैं बोलता हूं कॉन्ट्रैक्ट देता हूं बॉर्डर स्टेट में, सप्लायर भी आउटसाइड स्टेट में, ठीक है, जब वो सप्लाई करेगा एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड है, तब मैं वो मेरे को आईजीएसटी चार्ज करेगा। सो वेन एवर ही चार्जेस आईजीएसटी, मैं उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा। दैट इज व्हाट द टीडीएस रूल सेज। Single contract 2.5% or no single contract? Yes, single contract says that under a contract, each contract, single contract should exceed 2,50,000। So this is very important, note TDS। तो इसको आप समझ लीजिए, फिर we'll go back to that slide। TDS to be deducted or no where the location of supplier, place of supply and recipient are in the same state। तो फिर TDS डिडक्ट करेंगे या नहीं? TDS to be deducted as CGST and SGST because location of supplier and place of supply are in the same state। Yes. Now, location of supplier and place of supply are in different states। Location of supplier and place of supply are in different states। Yes, still TDS to be deducted as IGST क्योंकि place of supply का लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट का कुछ नहीं लिखा है। वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लायर इन डिफरेंट स्टेट, आईजीएसटी डिडक्ट होगा, करेक्ट।
Location of supplier and place of supply are in the same state, but recipient is in a different. जो रिसीवर है वो बाहर का है. लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट, बट गवर्नमेंट कहीं और की है. जैसे मैंने रोड लेइंग का गलत एग्जांपल दे दिया कंफ्यूजन के लिए. लेट्स टेक अ करेक्ट एग्जांपल वेयर द आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर इन कर्नाटका एंड बॉम्बे दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि उनको टूरिज्म का एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए. तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो गया? कर्नाटका में. तो लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट, बट रिसिपिएंट, ये बेनिफिट किसको जा रहा है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को. महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज अनदर स्टेट, तब टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक जो चार्ज करूंगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज करूंगा, वो टीडीएस कैसे डिडक्ट कर सकते हैं? कर्नाटका जीएसटी का. तो व्हेन द रिसिपिएंट इज इन डिफरेंट स्टेट, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड. समझ गए आप? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी डाउट स्टिल नाउ? वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन टीडीएस, आई थिंक नथिंग एल्स. फिर से एक्सप्लेन कर दो. ठीक है तनुश्री. तनुश्री क्या है? टीडीएस कब डिडक्ट करते हैं ये तो समझ गए आप. करेक्ट. वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, दो चीजें अगर सेम स्टेट में है तब सीजीएसटी एसजीएसटी का टीडीएस डिडक्ट करेंगे, वो 1%. अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में है तब भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे, वो 2% हो जाएगा. लेकिन जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही जगह है लेकिन रिसिपिएंट बाहर दूसरे स्टेट में है, तब टीडीएस डिडक्ट नहीं हो, क्योंकि टीडीएस डिडक्ट करना प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा. अगर इम्प्रैक्टिकल है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे. कब इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा? जब मैं एक स्टेट में हूं और सप्लायर मेरे को आईजीएसटी चार्ज करता है, तब मैं टीडीएस डिडक्ट कर सकता हूं. लेकिन सप्लायर सीजीएसटी एसडी चार्ज करता है मुझे, तो फिर मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं कर पाऊंगा. ठीक है. हाउ कैन recipient become different state? Possible, no, in my example. Now that advertisement of the outside government giving some work here, correct? It's a government project. Now you are from which state? You are from, say, Tamil Nadu. Tamil Nadu government is giving me some work to do something, and they're saying that you have to raise a bill to Tamil Nadu only. I will raise to Tamil Nadu, but the place of supply is what? It is Karnataka. Correct? So if it is Karnataka, I will charge CGST and SGST. They cannot claim the credit and they cannot deduct TDS also. Any other doubts? Understand this TDS TCS will be very helpful. Yes, पर आंसर भी दे दिया यार. ये चलेगा. Location of supplier is Kolkata. Place of supply is Kolkata. And place of recipient also in Kolkata. सब कुछ कोलकाता है, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा. टीडीएस applicability is 2%. Location of suppliers Kolkata.
place of supply is Jharkhand, and place of recipient is Kolkata. So location of supplier and place of supply is in same state, and place of supply is outside the state. लेकिन place location of supplier and place of recipient is in same state, तब TDS लगेगा. भाई भाई है ना. So अगर location of supplier and place of recipient is in same state, then TDS will apply. Where location of supplier and place of supply is in same state, but the place of recipient is outside the state, then TDS, CGST, SGST will be charged, so no TDS. So understand simple, where the location of supplier and place of supply are in different state, तब GST TDS नहीं लगेगा. ठीक है. प्रोसीजर पोस्ट डिडक्शन क्या करना है? डिपॉजिट द टैक्स टू द गवर्नमेंट अकाउंट बाय द 10th ऑफ द सक्सेडिंग मंथ. फिर टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है जीएसटीआर 7A में. इफ नॉट डिडक्टेड ऑन टाइम, तो फिर गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट लगेगा. अमाउंट ऑफ टीडीएस विल रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. A person required to deduct TDS shall submit an application on common portal. तो अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर आपको अप्लाई करने का, इसीलिए टीडीएस है ना. अगर आप अनरजिस्टर्ड को भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है बोलेंगे, तो फिर गवर्नमेंट का बेस कैसे बढ़ेगा? That's why they've said that to increase the base, a recipient who is not registered will have to register. You can charge CGST and SGST Tamil Nadu. When you go to a hotel stay Unnikrishnan, you're going to Shimla. Now, will that Shimla person charge you IGST or CGST and SGST? The place of location of supplier is Shimla. Place of supply is also is in Shimla. So he will charge you CGST and SGST even if you are from Tamil Nadu. He will charge you what taxes he has to pay, not depending on where you are. You not attend the session of place of supply. Place of supply for immovable property is the location where that immovable property is located. Similarly, in this work contract services of the government, place of supply is where I have conducted this. That's why it will be the place where I have to, what is my place of supply itself. तनु, एग्जाम्पल कौन सा क्लियर नहीं हुआ बताइए. बिफोर वी गेट इनटू टीसीएस, आपका क्वेरी क्लोज कर लेंगे. If unregistered, CGST, ST, it is not based on registered or unregistered. It is all on the place of supply. If you are unregistered and if your place of supply is outside India, still you can outside the state. Tax will be, TDS will be IGST TDS. ठीक है. Let's proceed to TCS. Tanu, if you're clear. जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाला था, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट आती है कर्नाटक में और उनको महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलप करना है. ठीक है. तो बोलती है महाराष्ट्र, विजिट महाराष्ट्र के एड्स डालो पूरे कर्नाटका स्टेट में. तो मैं होर्डिंग्स डालता हूँ, ये बैनर्स डालता हूँ. जब मैं बैनर्स डालता हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? हमने देखा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर समथिंग वेयर फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड, दैट विल बिकम द प्लेस. लोकेशन ऑफ सप्लायर कौन है? मैं कर्नाटका से तो हूँ. लोकेशन ऑफ सप्लाई इज कर्नाटका. प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो कर्नाटका. एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज आउटसाइड द स्टेट. तब गवर्नमेंट है वो, उसको टीडीएस डिडक्ट करना है. क्या वो टीडीएस डिडक्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो आउटसाइड द स्टेट है और मैं यहाँ का जीएसटी चार्ज करता हूँ. वो कर्नाटका का टीडीएस उसको डिडक्ट करने की बेनिफिट नहीं है, तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा.
Karnataka based company billed to Karnataka based customer but shipped to Tamil Nadu. So what is the GST will apply? First, you tell me, Unikrishnan, if a Karnataka based company billed to Karnataka, shipped to Tamil Nadu, what GST will you charge? 2%. Yes, yes, 2%. If it is IGST, 2%, Sriram. So, Unikrishnan, when you bill to Karnataka customer, you will charge CGST, SGST only. Correct. So he will deduct TDS. Even though you ship outside, still he will charge GST. Location of supplier, place of supply, location of recipient is in Karnataka itself. So he will charge if TDS is applicable. If you're supplying to a government, then and its value 2.5 lakhs and above, then the government will deduct TDS. Okay, let's go to TCS. TCS is simple. It is applicable to an electronic commerce operator. What is an electronic commerce operator? E-commerce means any person who supply goods or supply services or supply goods or services through digital networks, including digital products. You can supply goods or services or electronic products through digital network or electronic network. Matlab, mobile app, anything you use electronically or selling it, not physically. It means you're a electronic commerce operator. In other words, e-commerce operator means any person who operates, manages the digital electronic facility or platform for e-commerce. And e-commerce is defined. मतलब जो भी आप electronic mode से service करते हो, sale करते हो, purchase करते हो, that is e-commerce. In this transaction of e-commerce, any type of supply, you can supply goods through e-commerce subject to TDS, TCS. If you're supplying goods through e-commerce, then the subject to TCS. If you're supplying services through e-commerce, other than notified services, or if it is notified services, then e-commerce has to pay GST under reverse charge. So e-commerce में दो चीजें हैं. One is e-commerce itself pays and one is e-commerce deducts TCS. So in this scenario, e-commerce deducts TCS. In this scenario, e-commerce pays to the government. ठीक है, ओला उबर इज ई-कॉमर्स, वहां पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है. वहां पे डायरेक्टली ई-कॉमर्स पेज फुल टैक्स, मतलब टैक्स कलेक्टेड और छोड़ मतलब छोटा अमाउंट लेगा. तो कब होगा वो? व्हेन यू आर सेलिंग एनी गुड्स. जब आप Amazon पे कुछ प्रोडक्ट बेचते हो, तब Amazon विल कलेक्ट टीसीएस. लेकिन जब आप नोटिफाइड सर्विसेज जैसे ये ऑमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल, रेडियो कैब, मोटर कैब करते हो, या फिर आप होटल्स, आई टेल यू द एग्जांपल्स ताकि हमको कनेक्ट हो जाए. रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, ऑमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल बोला. सेकंड, होटल, इंस, गेस्ट हाउस. एंड थर्ड इज हाउसकीपिंग, अर्बन क्लैब और सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट. इन चार चीजों के ऊपर ही टीसीएस लागू है. So when you are supplying anything through these e-commerce platforms, तब TCS लगता है. ठीक है. TCS applicability अगेन मैं बोल देता हूँ. सेलिंग ओन प्रोडक्ट्स थ्रू योर वेबसाइट. अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो, इसका मतलब नहीं है कि आप ई कॉमर्स कर रहे हो. अगर आप कुछ ऑनलाइन अपने वेबसाइट से भेजते हो, तब TCS अप्लीकेबल नहीं होगा. सेलिंग बॉट आउट प्रोडक्ट्स, आप ट्रेडिंग करते हो अपने वेबसाइट से, फिर भी TCS अप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन आप ऐसे पोर्टल पे जाते हो, सो आपको फैसिलिटेट करता है, तब टीसीएस लगेगा. एंड ऑपरेटर शैल डिडक्ट टीसीएस व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर. क्योंकि कलेक्शन किसको जाता है? तो आप पेमेंट करते हो डायरेक्टली अमेजोन को पे करते हो, अमेजोन वो सप्लायर को पे करेगा, इसलिए तब टीसीएस लगेगा. एंड इन दीज केसेस, स्पेसिफाइड केसेस पे टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन इनका टैक्सेस डायरेक्टली ई कॉमर्स पे करेगा. ई कॉमर्स का रेट क्या है? 0.5% प्लस 0.5%, 1%, और आईजीएसटी केसेस में 1%. ऑन व्हाट वैल्यू? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज माइनस रिटर्न्स. जो भी रिटर्न्स होगा उसका कम करके करेंगे. टीसीएस पर्सन लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स. ई कॉमर्स थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ नहीं है. रेट ऑफ डिडक्शन 1% है. वैल्यू ऑफ कलेक्शन विल बी ऑन नेट वैल्यू, मतलब रिटर्न्स के बाद ड्यू डेट ऑफ पेमेंट विद इन 10 days. सिंपल है टीसीएस, नो कॉम्प्लिकेशन.
लेकिन फास्ट चले गए हम क्योंकि हमको कवर अप करना था. प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनीथिंग. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट टू बी डिपॉजिट? ऐसा कुछ मिनिमम अमाउंट नहीं. एनी क्वेश्चंस? I'm so glad that in this classes we are able to cover up everything, even though we have been fast, but we are understanding, right? That is more important. टैक्स कलेक्शन एट सोर्स दो तरह के, आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा. ये चार्ट एकदम क्लियर है. जब आप गुड्स सप्लाई करते हो ई कॉमर्स में तब टीसीएस लगता है. इफ यू आर सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स सर्विसेज तो फिर अगर नोटिफाइड सर्विसेज है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज. टीसीएस विल नॉट अप्लाई. अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज है तो फिर टीसीएस लगे. समझे? नोटिफाइड सर्विसेज फुल अमाउंट, नॉन नोटिफाइड सर्विसेज टीसीएस लगेगा और गुड्स के लिए भी टीसीएस लगेगा 1% पे लगेगा. Good. No more questions then? Oh, there is one question. सर ओवर द काउंटर का मतलब जीएसटी ऑफिस के अंदर जाके पेमेंट करना होता है ना? नहीं, ओवर द काउंटर ऑफ द बैंक जीएसटी कलेक्शन नहीं लेता है. हाँ प्रीति, it's too bulky for us to complete this much syllabus. No, it is not. Income tax is more bulkier than this. This has more concepts to understand. Once you read it, it becomes very easy. Awesome. Thank you very much. See you in the next class. Sorry, one more doubt is there? No more doubt. थैंक यू सर. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir.